welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री, your guide to all the latest from the world of Bollywood entertainment and social media. आज है होली। देश, दुनिया और पूरे बॉलीवुड में छाई है होली सेलिब्रेशन की धूम। जूम की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के इस प्यार भरे त्योहार के लिए बहुत सारी बधाइयां। But before I begin today's episode, I'd like to remind all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel, which has all the news of your favorite celebrities. For now, let's begin the show. Celebs and their hilarious pranks. Celebrity kids who are ruling the social media. Yami Gautam recalls childhood memories of Holi. होली की धूम में बुरा ना मानो होली है कहकर हर कोई एडवांटेज लेता नजर आ जाता है। तो भाई हमारे बॉलीवुड स्टार्स इस मामले में कहां पीछे रहने वाले हैं। वैसे भी अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान, अजय देवगन और यहां तक कि रणबीर कपूर भी एक से बढ़कर एक प्रैंकस्टर्स हैं। आपके होली सेलिब्रेशन में हम प्रैंकस्टर बॉलीवुड स्टार्स की शरारतों का ऐसा रंग भरने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आपके होली सेलिब्रेशन की मस्ती डबल हो जाएगी। और क्या पता, अक्षय कुमार, आमिर खान, अजय देवगन, रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी जैसे प्रैंकस्टर्स से आपको प्रैंक्स प्ले करने के लिए कोई नई टिप मिल जाए। आपके होली सेलिब्रेशन में हम प्रैंकस्टर्स बॉलीवुड स्टार्स की शरारतों का ऐसा रंग भरने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी होली सेलिब्रेशन की मस्ती डबल हो जाएगी। और क्या पता, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, रोहित शेट्टी और रणबीर कपूर जैसे प्रैंकस्टर्स से आपको प्रैंक्स प्ले करने के लिए कोई नई टिप ही मिल जाए। अक्षय कुमार प्रैंक्स के मामले में भी परफेक्ट खिलाड़ी हैं और उनकी बाकी को स्टार्स की तरह हुमा कुरैशी भी जॉली LLB 2 के वक्त अक्की के प्रैंक का शिकार बन चुकी हैं। हुआ ये कि अक्षय कुमार ने शूटिंग के वक्त हुमा कुरैशी के मोबाइल से कई बॉलीवुड स्टार्स को मैरिज प्रपोजल ही भेज दिया था, जिसके बाद हुमा कुरैशी को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वेट। रणबीर कपूर भी प्रैंक्स के मामले में किसी से कम नहीं है। ये जवानी है दीवानी के वक्त रणबीर कपूर अपने को स्टार्स आदित्य रॉय कपूर और कल्की के साथ एक हिलेरियस प्रैंक प्ले कर चुके हैं। रिपोर्टेडली फिल्म के एक सीन में उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करना था, लेकिन शूटिंग में पानी से भरे ग्लासेस को रणबीर कपूर ने एक्चुअल अल्कोहल से रिप्लेस कर दिया था। अब आप खुद सोचिए रणबीर कपूर के को स्टार्स आदित्य रॉय कपूर और कल्की को कैसा झटका लगा होगा। प्रैंक्स के मामले में अजय देवगन भी जितने सीधे दिखते हैं उतने वो एक्चुअली है नहीं। सन ऑफ सरदार की शूटिंग में उन्होंने सेट्स पर सबको गाजर का हलवा ऑफर किया था, ये कहकर कि उन्होंने ऐसा हलवा लाइफ में कभी नहीं खाया। फिल्म में अजय देवगन के को स्टार रहे अर्जुन बाजवा ने ये किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि अजय देवगन का ऑफर किया हुआ गाजर का हलवा दरअसल हलवा नहीं बल्कि रेड चिलीज का पेस्ट था, जिसे टेस्ट करने के बाद को स्टार्स का क्या हाल हुआ होगा वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आमिर खान ने अपनी दंगल को स्टार फातिमा सना शेख के साथ एक बेहद मजेदार प्रैंक प्ले किया था। वो अपना कॉफी मग लेकर फातिमा सना शेख के पीछे जाकर बैठ गए और बातों ही बातों में फातिमा सना शेख के सर पर हॉट कॉफी उड़ेलने लगे। इस सिचुएशन में फातिमा सना शेख इतनी डर गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाद में पता चला कि आमिर खान प्रिटेंड कर रहे थे कि वो हॉट कॉफी पी रहे हैं, जबकि उनका कॉफी मग खाली था। Shilpa, you're coming up with a new show called Shape of You. So what's new on the show for the audience? So I've done cinema, I've done television, and now it's time for radio. So I'm an RJ for the first time. तो ये अलग है मेरे लिए, एक अलग किरदार. And Shape of You is based on obviously not just the shape of
people's physical bodies, but also their personalities, their mental health. I just think it's different and it's very relevant in today's time and age. So I'm loving playing this role and also listening to people's journeys in their wellness and their health goals. Which side of Shilpa's personality do we get to see during the show? I don't think there's anything that is hidden anymore. But they'll get a closer insight or look into my life and my, my love and my passion for health and fitness and wellness. And I'm trying to emphasize more on mental health through this show. And I really hope I'm able to, cater to more people and target the problems that, this generation's facing in terms of, insecurities and, the whole pressure with social media and even COVID, for example. It's taken a toll on our mental health. So I really hope that it can answer a lot of questions for this generation and the generations, before. I think it just caters to all, one and all. So I think it's an interesting show from, that perspective. Shilpa, I know you've heard this a million times over, but you look radiant. And what's the secret behind that? You've got to tell us. Makeup. No, I think it's yoga. I'd have to give credit to yoga. I think when you're aligned and and you're living in awareness, it kind of reflects on the outside. Today you're shooting in a vanity van. I was wondering, what kind of music or vibe do you create in the van? Tanya, my stylist and my designer, came into the van and she was like, whoa, what is this music? So I was listening to Ya Devi Sarva Bhuteshu and it was like in this very calming. I like to create, an ambiance where I feel calm and I feel happy and I feel positive. So then I can exude that when I go onto the sets. And what are the things that you must have in your vanity van? Must-haves. A television. That's missing right now because I love watching Crime Patrol when I get the time. Well, but when you're doing shows and all, you hardly get any time. But in between shots when you're filming, I love watching, and my iPad also. So I now catch up on a lot of stuff that's on the OTT platform. Now, this is a question on all of our minds. What is your diet schedule like? Oh, that you have to ask my man Friday. He's amazing. He keeps everything from almond milk to, makhanas to, all things that I can, eat that when I'm peckish. Well, I've talked about it in my book, The Great Indian Diet, what I eat, what I, practice. I like to keep a very clean, healthy diet. I don't like junk food. So just keeping the basics in place. I like to keep it high protein, high fiber in the mornings. And I go into a very big lunch that consists of rice and a protein and a sabzi. And I ended up with some good or maybe some dark chocolate if I feel like it. And then it goes into snack, which is like, I also like to have like pomegranates, blueberries, papita. I love fruit. So that also, there's a certain aspect that I make sure that I, add to my nutrition and my diet. And then the night I like to keep it light. I love my chai with coconut sugar. 2 cups of tea, one in the morning, one in the evening. And in the night it's simple. I wind down with like a lighter meal. More, again, high protein with a soup. Shilpa, can you tell us, now this is something that our audience would love to know, and so would we. How do you define self-love? If you don't have love for yourself, you can't expect other people to love you. And keep it simple, keep it soulful, and learn to appreciate yourself, live in gratitude, and believe that someone else up there loves you unconditionally. So, yeah, if you have that, you'll always be very happy.
बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं, सोशल मीडिया पर स्टार किड्स की भी धूम है। अनन्या पांडे और एसआर के डॉटर सुहाना खान की बात तो छोड़िए, सैफीना के किड्स तैमूर और जय की भी सोशल मीडिया पर मैसिव फॉलोइंग है। चलते। लेकिन अनन्या पांडे और जानवी कपूर और उनके बाद डेब्यू के लिए तैयार कुछ स्टार किड्स अनडाउटेडली अपनी ह्यूज फैन फॉलोइंग से सोशल मीडिया पर कर रहे हैं रूल। स्टार किड्स इस मामले में वाकई लकी है कि उन्हें फैमिली की लेगेसी से थोड़ी बहुत स्टारडम बिना किसी एफर्ट्स के मिल जाती है। लेकिन कुछ स्टार किड्स ने इस लेगेसी को अपने स्टाइल कोशेंट और हार्ड वर्क से ग्रेजुअली अर्न किया है, जिनमें अनन्या पांडे से लेकर शनाया कपूर तक कई नाम शामिल हैं। और कौन से स्टार किड्स शामिल है इस लिस्ट में, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। चंकी पांडे's डॉटर मैसिव फैन फॉलोइंग के मामले में बाकी स्टार किड्स से काफी आगे है। रिसेंटली गहराइया के लिए उन्हें फैंस और क्रिटिक्स से काफी अप्रिसिएशन मिला है, जिसकी बदौलत इंस्टाग्राम पर उनका फैन बेस पहुंच गया है 21.7 मिलियन के पार। श्रीदेवी और बोनी कपूर की डॉटर एंड धड़क गर्ल जानवी कपूर की फैन फॉलोइंग है 15.8 मिलियन। राजकुमार राव और जानवी कपूर की लास्ट रिलीज रूही ने उन्हें इंडस्ट्री की यंगर ब्रिगेड में एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दी है। और अब जानवी कपूर दोस्ताना 2 और गुड लक जेरी जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेसेस के साथ रेस लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान के बॉलीवुड डेब्यू से जो धूम मचेगी वो बाद की बात है। फिलहाल सुहाना खान फैंस को उनकी डेली लाइफ के अपडेट्स देकर इम्प्रेस करने में कामयाब रही है और अपने स्टाइल कोशेंट के दम पर सुहाना के पास है 2.5 मिलियन फॉलोअर्स। संजय कपूर की डॉटर शनाया कपूर भी जल्द अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही शनाया कपूर इंटरनेट सेंसेशन बनने में कामयाब हो गई है और इंस्टाग्राम पर शनाया कपूर के पास है 1.2 मिलियन फॉलोअर्स। मस्ती और धमाल के साथ साथ होली प्यार का त्योहार है, तो फिर उन स्टार्स की बात कैसे नहीं होगी जिनकी जिंदगी में प्यार एक बार फिर बहार बनकर लौटा, फिर भले वो सैफ अली खान हो या फिर मलाइका अरोरा। और अब तो रिसेंटली इस लिस्ट में फरहान अख्तर का नाम भी जुड़ गया है। इन सभी स्टार्स ने प्यार को दोबारा चांस दिया। वेल यस, होली का सेलिब्रेशन हमें बुरा वक्त भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है और हमारे बी टाउन सेलिब्रिटीज ने अपनी पर्सनल लाइफ में प्यार को सेकंड चांस देकर अपनी लाइफ को एक नई जर्नी दी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन से बी टाउन स्टार्स हैं जिन्होंने उनकी मैरिड और लव लाइफ की जर्नी को फिर से दी है एक खूबसूरत शुरुआत। सैफीना है बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट लविंग कपल्स। करीना कपूर ने जब उनकी लाइफ में एंट्री ली, वो अमृता सिंह से तलाक ले चुके थे, लेकिन जब प्यार होता है तो फिर पिछले रिश्तों की कड़वाहट हम भूल जाते हैं। ऐसा ही सैफ के केस में हुआ और इंटरेस्टिंगली सैफीना की मैरिज अटेंड करने वालों में सैफ के किड्स सारा अली खान और इब्राहिम अली भी शामिल थे। फरहान अख्तर और उनकी फर्स्ट वाइफ अधूना ने 2016 में अपनी 15 साल की मैरिड लाइफ को छोड़कर अलग होने का फैसला किया। हालांकि सेपरेट होते वक्त इस कपल के बीच कोई बिटर फीलिंग नहीं थी। फिर कुछ साल बाद फरहान की लाइफ में एंट्री ली शिबानी डांडेकर ने और कुछ साल सीरियस रिलेशनशिप में रहने के बाद ये कपल रिसेंटली शादी के बंधन में बंध गया है। मलाइका अरोरा और अरबाज खान के बीच सेपरेशन और डिवोर्स के बावजूद
बी टाउन का ये एक्स कपल उनके सन अरहान की अच्छी तरह को पेरेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन मलाइका अरोरा की लाइफ में प्यार ने कैसे एंट्री मारी है, वो सबको साफ नजर आ रहा है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के एक साथ हॉलिडे पर जाने और एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने के वीडियोस और पिक्चर्स आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। दिया मिर्जा और साहिल 11 साल की मैरिड लाइफ के बाद अलग हुए तो फ्रेंड्स के तौर पर उनका कनेक्ट नहीं टूटा, लेकिन जल्द ही दिया की लाइफ में वैभव रेखी का साथ मिल गया। लास्ट ईयर दोनों की वेडिंग भी रही टॉक ऑफ द टाउन और दिया को देखकर तो यही लगता है कि प्यार को सेकंड चांस देना उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ है। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to a Holi special episode of Speak Easy. Today my guest is as colorful as today is. She's warm, she's very kind, and of course she's very talented. I'm talking about the beautiful Yami Gautam. Happy Holi. Thank you, Rudra. Wish you the same. Congratulations on that beautiful wedding. Thank you. Yes, we're meeting after that. We're meeting after that. Such wonderful pictures. It was a simple, beautiful wedding. And I think it just made me happy looking at the pictures. And you looked so happy. That's always what you wanted, no? Like with the man you love, a simple wedding. Absolutely. And remember we spoke also, we had an interview a year before and I didn't know that it's going to happen so soon. But see, I don't lie. I did every bit of the thing that I said. And why not, Rudra? I mean, you work so hard, you work so much. Whoever you are in life, some important occasions which mean a lot to you should be done the way as per you want, versus what is expected out of you because you are a public figure or whoever you are. And we, both of us are very simple people, needless to say. So, very private about our personal lives. And everybody needs to be given respect for what they believe in. Absolutely. If you are a private person or if you're not a private person, that's all right. As long as you are happy. And we were very happy being like that. So even the marriage had to be an extension of, our belief system. And Aditya and I both are, people who we've grown up with the idea that there's so much, with all due respect, but the food wastage and a lot of things that happen, a lot of drama that happens from how a marriage becomes a wedding thing, that's something which we didn't want to do. And also it's your day where you want people who really bless you from the heart. Absolutely. Need to be there. And that's always your immediate family members. Of course, we wish there were a couple of more of our family members. For me, definitely my nani. But they're like, you know what, we are with you, we're going to sing songs being there wherever we are, and let's maintain that 20 limit which was there. So that's a message which goes out also to everyone that no one is above the law. The law. And we did every ritual. I would have still worn my mom's sari even if it was not for pandemic. That was my, way of my ode to my roots. Holi is such a happy festival. Tell me your earliest memories of Holi and what plans this time is going to be post-marriage. Yes, I think the idea of Holi and the activity-loaded Holi, it kept, coming down, I think, with growing age. But the max that I've played Holi, I think, has been easily till I think I was 14 years, and that was such fun time. Especially, I think, when I was like 7, 8, 9, 10, 11, my God, we used to be busy. I think from 7 in the morning, Mom used to, dress us up nicely, oil our faces and body, and tell us again and again that your skin is sensitive. Make sure nobody puts pakka rang on you. She used to instruct, "Arey, tum mat lagana isko pakka rang, hamesha lagate ho, ye, wo, this, that." And she would keep gujiyas for us ready. And we would be so busy, all the kids, and it used to be so much fun using that pichkari. And of course, you had to, that Holi shopping also used to happen one day before.
and to see किसकी सबसे जिसने बड़ी पिचकारी ली है, and which is the most strongest with the most pressure, which can take the water pressure, and those water balloons, वो फुलाना कितने मतलब कितना ज़्यादा काम होता था. The more colorful it is, the better it is. And किस पे फेंकना है, कौन तंग करता है खेलते वक्त हमें शाम को. That's true. This to be, and I remember once it was really special. Then after Holi celebration, along with our family friends, we drove to Dharampur just before Shimla, and there you have a dhaba which has amazing food. We had that, then we went I think to some fantasy park छोटा सा, वहाँ पे कुछ boating करके हम लोग फिर शाम तक वैसे ही बने हुए थे. We came back home. ये जो होली है क्या होगी उस होली? I think it's going to be at home. Quiet one, and we'll just wish each other. We'll just put, knows my skin is super sensitive, so just one tika with tick, we'll just go there. And I think, but yeah, I'm gonna try make some gujia at home. I'm gonna try that. Happy Holi. Thank you. And if you want to tell everybody, wish them and tell them if you have something to tell them on Holi. Wishing all the viewers of Zoom a very happy Holi. Holi तो मतलब इतने गाने बने ऑलरेडी होली पे, आई थिंक जितने हमारे इंडस्ट्री से निकले हैं, खासकर जो पुराने गाने हैं, तो आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है होली क्यों इतनी खास है और इतना एक खुश मिजाज फेस्टिवल है. और या बट स्टे सेफ, यू नो, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसको एक मज़े में ही लें, एंड यू नो नेवर टू क्रॉस द लाइन एंड मेक इट अनकम्फर्टेबल फॉर एनीवन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अच्छा खाएं और अपनी मेमोरीज बनाएं, जैसे हमने आज रुद्रा और मैंने इतनी बातें की होली के ऊपर की व्हाट इट मेंट टू मी. सो मेक दोस मेमोरीज काउंट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड रियली एंजॉय यू नो दिस फेस्टिवल फॉर द रियल एसेंस इट होल्ड्स. So sweet. Absolutely right. Thank you once again. Thank you so much. Lots of love. Lots of love. And once again, happy Holi. Thank you, Rudra. I wish you the same. Thank you. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. As much as I hope you enjoyed playing Holi today, I hope you had a safe Holi, guys. एक बार फिर से हमारे सारे दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं. मैं हूं सागरिका छेत्री, signing off for now. You guys, please stay home and stay safe.